A very pleasant morning to everybody. This is CH Chinmay Pathak, and we are going to start with the part 2 of this chapter, Indian Regulatory Framework for the June and December 2024 CA Foundation Business Laws. All those who cannot understand Hindi, you also are welcome, because in this lecture we are going to cover the same content in Hindi as well as English. First I will explain in Hindi and then in English. So you can very well be with me and enjoy the lecture as such. Obviously there will be question and answer practice also in the session. So let's start. पहले जो रिकॉर्डिंग थी, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी लाइव लेक्चर से, जो 2 घंटे की थी अप्रोक्सीमेटली, इट इज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ री रिकॉर्डिंग. The original recording of 2 hours that we had from our live lecture is lost due to some technical issue, and that's why this is another recording that we are providing. It is also a detailed one. So we stopped at मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे रुके थे. जैसे कि आप देख सकते हो सर, ये मिनिस्ट्री क्या चीज होती है. देखिए, आप लोगों ने किसी लोगों को चुना और वो जाके कहाँ पे बैठ गए पता है? राज्यसभा लोकसभा में जाके बैठ गए. अभी वो जब वहां पे जाके जब वो बैठ जाते हैं ना सर, तो बैठने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि वही लोग पूरा इकोनॉमी चलाएंगे. जैसे in the case like when you are electing the people of your choice for Rajya Sabha, Lok Sabha, it is not the case that the ministers themselves run the economy. Do you think Nirmala Sitharaman ji खुद ही economy चलाती है? Do you think Nirmala Sitharaman by herself, she herself runs the economy? No, they need a staff. उनको एक staff की जरूरत पड़ती है. और staff मतलब क्या सर, इसमें क्या क्या आ सकता है तो हम देखते हैं. तो व्हाट डू आई मीन बाय स्टाफ? आई बेसिकली मीन दैट यूपीएससी, मतलब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्जाम कंडक्ट करता है. यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जाम थ्रू विच दिस सिविल ऑफिसर्स आर इलेक्टेड, और यही सिविल ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं द मिनिस्ट्री इन वर्किंग. So UPSC conducts exam and recruits civil servants, and these civil servants then help the ministry to run. ठीक है. So ministry क्या होती है? It is a part and parcel of the government. Legislature में बैठती है ministry. मिनिस्ट्री के कंपोनेंट्स कौन होते हैं? सबसे हेड में हो जाती है जो फाइनेंस मिनिस्टर है. एट द हेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एट द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री there is a minister, and below him are all the civil servants that are being recruited. So obviously you should know when you're writing the answer, जब भी आप आंसर लिखोगे रिगार्डिंग मिनिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई हेड होगा. देयर विल बी अ हेड फॉर द मिनिस्ट्री. आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी स्टाफ, सो देयर विल बी स्टाफ फॉर द मिनिस्ट्री. सो लेट्स गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय. वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको क्या काम हो सकता है? व्हाट द वर्क मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी डूइंग? ऑब्वियसली इट हैंडल्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. ठीक है, इकोनॉमी हैंडल करती है, हैंडल्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट को जो पैसा लगता है वो लाना और उसको खर्च करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. सो व्हेनेवर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स एनी फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर और इट रिक्वायर्स फंड्स फॉर इनकम, बोथ वेज, द ट्रेजरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्ट्स एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया. व्हाट आर द टास्क क्या होते हैं? तो जैसे कि आप देखते हो निर्मला सीतारमन जी एवरी ईयर शी कम्स ऑन टीवी एंड व्हाट शी प्रेजेंट्स द बजट. तो बजट देना इनका सबसे पहला काम हो जाता है. बजट इज देयर फर्स्ट फंक्शन. बजट में ये लोग बताते हैं कि टैक्सेशन में क्या चेंजेस करे हैं. तो द सेकंड फंक्शन दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इज अबाउट द टैक्सेशन. सेकंड फंक्शन उसका टैक्सेशन हो जाता है. थर्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे विल आल्सो टॉक अबाउट बैंक. सो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ टास्क, एंड लॉ रिगार्डिंग बैंक्स इज आल्सो प्रिपेयर्ड. सो लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन विल बी आल्सो बी देयर. साथ ही साथ शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में क्या बदलाव करेंगे, इसके बारे में बात करने के लिए दे ब्रिंग द कैपिटल मार्केट्स. प्लीज डोंट गो बाय लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग के साथ मत जाइए कि कैपिटल मार्केट्स तो शेयर मार्केट नहीं होता है वगैरह, जो भी आपके मन में रहेगा. दिस इज फॉर द पर्पस कि आपको याद रखने में बता रहा हूँ. जो भी कैपिटल चीजें होती है जहाँ पे मार्केट में मनी सोर्स किया जाता है, फ्रॉम वेयर द मनी सोर्स्ड, और मनी जहाँ खर्चा किया जाता है, मनी इज एक्सपेंडेड, दैट मार्केट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट. इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केट. सो अबाउट इट आल्सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टू डू समथिंग. फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके बारे में कुछ करना पड़ता है, इसलिए कैपिटल मार्केट इज आल्सो वन ऑफ इट्स टास्क. साथ ही साथ के राज्य सरकारों का पैसा किधर और कैसा खर्च होना चाहिए, कि हम राज्य सरकार को कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं. स्टेट फाइनेंसेस एंड सेंटर फाइनेंसेस, हाउ मच द स्टेट्स आर गोइंग टू गेट फंड्स फ्रॉम द सेंटर, इट्स आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टास्क गिवन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन लोग काम करते हैं सर? इधर यूपीएससी ने रिक्रूट किए हुए सिविल सर्वेंट, दोज रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, दो सिविल सर्वेंट्स वर्क फॉर दिस ministry. So basically 4 central civil services: Indian Revenue Service, Indian Audit and Account Service, Indian Economic Service, Indian Civil Account Service. Sir, do we not need to know in detail what this service do? नहीं, आपको पता नहीं होना चाहिए. नो, आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये लोग अंदर से क्या काम करते हैं. आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए. सर इतने नाम याद नहीं रहते, हटा दो, हटा दो. पहले और लास्ट वर्ड सेम रहेगा. द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड वुड बी सेम, इंडियन, and last one would be service. So since finance ministry जो है it is concerned about economics, so Indian economic service,
and since it also generates revenue, it also works for India income tax and GST. It is Indian Revenue Service. So if you learn these two types of services, it's also fine. You don't need to go into detail. साथ ही साथ याद रखिए ये कुछ काम का नहीं है, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस भी इनके साथ काम करता है. So डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर एंड इट हैज इट्स स्टाफ. Look, it has its staff, right? Civil servants. But every staff, everything, every like there are departments here. व्हाट डू मीन डिपार्टमेंट्स? मेरे डिपार्टमेंट का क्या मतलब है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, पैसे कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा. रेवेन्यू कलेक्शन विल गिवन टू वन डिपार्टमेंट. खर्चा कैसे करना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है, इसका एक काम एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा. सो हाउ टू डू एक्सपेंडिचर विल बी गिवन टू वन डिपार्टमेंट. सो एवरी मिनिस्ट्री हैज सर्टेन डिपार्टमेंट्स. ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑफ रेवेन्यू, of financial services, investment and public enterprises. Sir, do we need to know all of this? No. You just need to know Department of Expenditure, Department of Revenue and Department of Economic Affairs. These three are sufficient for your marking. You don't need to go for all this. Now comes our favorite ministry. हमारी सबसे favorite ministry है Ministry of Home Affairs, जिसको लीड कर रहे हैं अमित शाह जी. जैसे ही हम नाम सुनते हैं अमित शाह का, हमें इमीडिएटली याद क्या आता है बताएं? जम्मू एंड कश्मीर. हमको इमीडिएटली क्या आ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर. सो यस, अमित शाह, या फिर हम कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्ट्स एज अ फादर टू द नेशन. ये नेशन के फादर की तरह काम करता है. व्हाट योर फादर डज? योर फादर प्रोटेक्ट्स योर हाउस. क्या करते हैं आपके फादर? आपके हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं. सेम वे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर गृह मंत्रालय, दे प्रोटेक्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोटेक्ट्स द nation, not only from external issues only but also from internal security concerns. Okay, internal security, domestic policy, इसका ये they look upon this and it is headed by the Union Minister of Home Affairs. अमित शाह जी इसके ऊपर देखते हैं. टास्क अपने सिलेबस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिलेबस में नहीं है. सर डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बॉर्डर पे ध्यान देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. सर इंटरनल सिक्योरिटी पे देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. नाम ही याद आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. सो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हैज सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस. यू डोंट नीड टू गो इनटू एनी ऑफ दिस. You can simply ignore and only learn this one, that is Department of Official Language and Department of States. That's it for Ministry of Home Affairs. Sir, do we need to learn all this? No. You don't need to learn all of this. We will go, when we go into the question, you will get to know कि questions किस type के आते हैं. तभी आपको समझ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है. Okay. Ministry of Corporate Affairs, MCA. Ministry of Corporate Affairs is again headed by the Finance Minister only, not given here. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कि आपको कंपनी सेट पढ़ना मिल रहा है. इतना ज्यादा आपका बर्डन बढ़ गया, एलएलपी पढ़ने को बोल रहे हैं. इंसॉल्वेंसी आपको फाइनल में आ जाएगा. So Ministry of Corporate Affairs is basically concerned with Companies Act 2013, LLP Act 2008 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Sir, why not this? Or this is previous act. This is old law. So you don't need to write the year. You just need to write that current company law, previous company law, LLP law, and Insolvency and Bankruptcy Code. Sir, what is the Insolvency and Bankruptcy Code? We'll come into it when we'll go to the IBBI. Okay, that is the next part of this video. Not next part of this video, basically the further part of this video. Next is इसका task. What they do basically, they check कि the industrial sector जो है, they check कि जो अपना business sector है ना, इनके ऊपर ये rules regulations follow कर रहे हैं. That is regulation करते हैं of the Indian enterprises. Sir, constitution again, it is run by civil servants. Do we need to learn this Indian corporate law service? No sir, only right, run by civil servants. Exams are conducted by UPSC and this is completely irrelevant. Who is the highest post? We don't have to do anything regarding this. I hope this is clear to you guys. मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग क्वाइट कोजीली और थोड़ा सा फास्ट. ओके, देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. व्हाट डू यू मीन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? जहां पे न्याय, लॉ दिया जाएगा, सॉरी कायदा बनाया जाएगा, जस्टिस यानी न्याय दिया जाएगा. लॉ विल बी फ्रेम्ड एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड इज द मिनिस्ट्री, राइट? सो इट बेसिकली लुक्स आफ्टर द लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया. सर, यू हैव रेड ऑल दिस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? नीचे दिया गया. द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, दैट इज दिस एक्टिविटी जो होती है ना, इट बेसिकली क्या करते हैं पता है? जब भी कोई बिल आता है ना, हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिल, whenever a bill is proposed in ministry, this ministry is responsible for its draft. Okay, so the legislative department drafts the principal legislation for the central government, that is management of legal affairs. Then its second arm, second thing, department of legal affairs, ये क्या करता है sir? They are basically concerned with what? Advising the various ministries. They advise the various ministries
रिगार्डिंग जो देयर आर रिलेटिव्स, वो रिलेटिव्स है जिनको पूछते नहीं फिर भी हमको एडवाइस ज्ञान पेलते रहते हैं ना, वैसा वाला ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स. एंड देन कम्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सिर्फ चेक करते हैं वेदर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. दैट्स इट विद द मिनिस्ट्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू थिंग, न्यू type of concept which are basically the boards or various financial regulators in India. The first is the SEBI, second is the RBI, third is the IBBI. Sir, what do you mean by SEBI, RBI, IBBI? बेसिकली व्हेनेवर पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है ना, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई कॉर्पोरेशन बना के रखती है, कोई एंटिटी बना के रखती है. ओके, सो व्हेनेवर दे वांट टू, सो व्हेनेवर एक्ट इज पास टू कंट्रोल, टू रेगुलेट द एक्ट, टू मेक द एक्ट implement in a very calm way, the act makes few entities get incorporated. Just like for example, when the government wanted to control, regulate the share market, they formed SEBI. तो सेबी क्यों बना सर? शेयर मार्केट कंट्रोल करने के लिए. आरबीआई क्यों बना सर? आरबीआई बना ताकि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल में रहे. सर आईबीबीआई क्यों बना? ताकि डूबती हुई कंपनीज को सहारा मिले. तो एक बार एक सबको देखेंगे सर. सेबी इज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स, आरबीआई इज फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया, एंड आईबीबीआई इज फॉर companies who are going into dissolution, that is they are being wound up and we need to help them. So obviously SEBI does what? It deals in securities and commodity markets. Sir, securities and commodities, what is the difference? Securities means, as you can, I would just show you, securities means, if you go here, what you can see is here basically all types of stocks are listed, right? See, there are various kind of stocks, derivatives, and all these things. So this is called as securities, where shares, stocks, then debentures, deposits are dealt in, are called as securities. Commodity means where actually you deal in a commodity like rice, wheat, oil. Can you see here? See, steel. Can you see here? Steel. This is also stock exchange, guys. M6 is a stock exchange. Silver, gold, copper, gold, methanol, crude oil, cotton candy. Can you imagine? Can you imagine? These things are also traded. So SEBI looks after securities as well as commodity market in India. SEBI is again a Ministry of Finance का part. SEBI is a part and parcel of Ministry of Finance. Administrative law ये सब नहीं याद रखना है. You don't need to learn all this. Then when it was established on 12488. Sir, what is this 12488? It means 12th of April 1988. It is an executive body. अगेन इट इज नॉट एमसीक्यू पेपर. एमसीक्यू पेपर नहीं, तो ये सब चीजें नहीं याद रखनी अपने को. देन स्टैट्यूटरी पावर्स कैसा था? पहले 1988 में बनाई गई थी ना, व्हेन इट वाज फेम्ड इन 1988, इट वाज जस्ट अ एडवाइजरी बॉडी. तो वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, उसको कोई पावर्स नहीं थे. दे हैड नो पावर्स. देन हैपेंड द हर्षद मेहता स्कैम, द लेजेंडरी स्कैंडल बाय हर्षद मेहता. तो ये हर्षद मेहता स्कैंडल जब हुआ ना, एट दैट टाइम इन 1992 सेबी वाज गिवन एक्चुअली स्टैट्यूटरी पावर्स, दैट इज लीगल पावर्स टू एक्ट ऑन समवन, टू पनिश समवन. That's it about SEBI. We don't need to go in much detail because this is what is covered in module. इतना ही मॉड्यूल में दिया गया है. सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है? सर इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है. सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक? इट बेसिकली मींस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपने जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक, द बैंक अकाउंट वी हैव विद एचडीएफसी बैंक, yes bank, so these bankers have bank account at Reserve Bank of India. Reserve Bank of India prints the notes. Reserve Bank of India prints the note. Government of India prints coins. Always remember this. Okay, so notes are printed by the Reserve Bank of India, and it is responsible for what? It is responsible for regulation of the Indian banking system. Comes under again Ministry of Finance. See how important Ministry of Finance is. So any question is going to appear. पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वित्त मंत्रालय से आने वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई से आएगा. सर व्हाट अबाउट फंक्शंस? So Indian rupee supply and control of Indian rupee is done by the RBI. Second, economic development के लिए payment system, पेटीएम वगैरह जो चीजें होती है, it acts as a facilitation to it. RBI acts as a facilitation. Bharatiya Reserve Bank Note Mudran, BRBNM, is a specialized division of RBI, which means what? It prints Indian currency. There are only two stations in India. You don't need to learn the name, that is Mysore and Salboni. You just need to know that there are two printing press of RBI in India. It establishes National Payment Corporation of India. Whenever you do an online payment, it is settled through this NPCI. Okay, so NPCI is established by RBI. Then whenever you keep any deposit, जब भी आप बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट रखते हो ना गाइज, तो है ना, कभी बैंक डूब गई तो आपका पैसा का क्या होगा? तो ये पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी देने वाला आरबीआई है, जो ये होता है DIGCC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन. ये आरबीआई का ऐसा डिवीजन है. आरबीआई इज दैट डिवीजन विच guarantees credit facilities to all Indian banks and keeps their trust intact.
So that's it about RBI. And last is the Insolvency and Bankruptcy Code of India or Insolvency and Bankruptcy. Whenever a company किसी कंपनी की जब liabilities, when its liabilities exceeds its assets, when your liabilities exceeds your assets, you become bankrupt. आपकी दीवारखोरी या फिर आप बोल सकते हो डूब जाते हो. तो at that time गवर्नमेंट आपको ऐसे डूबने नहीं देती. गवर्नमेंट does not allow the companies to sweep away, wind up themselves so easily. They appoint an insolvency professional, generally a chartered accountant, insolvency professional, generally chartered accountant, who is a member of ICAI, that is insolvency professional agencies, एंड दे आर अपॉइंटेड. उनको बोला जाता है कि आप अगले 6 महीने तक इस कंपनी को जिंदा करके दिखाओ वापस. दैट इज गिवन अ टाइम लिमिट. ओके, सो जो डेटा जहां पे स्टोर होता है उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. सो आईबीबीआई इज द रेगुलेटर एंड फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स मतलब जो डूब जाती है उस कंपनी की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए किनके थ्रू किया जाता है सर? आईसीआई जैसी इंस्टीट्यूट, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. कौन करता है सर? सीए जैसे लोग, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड people like CA, insolvency professionals, and the data is stored here on information utilities. Again established on 2018-16 1st October, but it was given power on 5th of May. 5/5/16 was given power on 5/5/16, that is 5th of May 2016. It covers individuals, it covers companies, it covers LLPs, it covers firms. But for all this there is something called as DRT, Debt Recovery Tribunal. DRT मतलब क्या होता है? What do you mean by DRT? Basically the judges sit in DRT. The judges for insolvency proceedings of these people sit in DRT, right? Then this new code will speed up the process of resolution. Next, it will simplify the process of bankruptcy. And lastly, companies will be dealt in at NCLT, National Company Law Tribunal. This is just a code for companies, and individuals will be dealt at debt recovery, DRT, that is individuals ke liye this is there. So that's it with this chapter. The last thing that we have to go through is the structure of the Indian judicial system. That is how justice will be served to people. The biggest court in India is the Supreme Court. It is the only one court in India. Supreme Court is the apex court. Whatever Supreme Court says is binding. Supreme Court का कहना पूरी तरीके से 100% binding होता है, mandatory होता है for all the lower कोर्ट. सर लोअर कोर्ट्स मतलब कौन से? सुप्रीम कोर्ट इज फॉर इंडिया. इंडिया का एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए हो जाता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट शेयर भी किया जाता है, 2 स्टेट का एक होता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो सकता है. एंड देन हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द बिलो हाई कोर्ट कम्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली डील्स विद सिविल केसेस. सिविल मीन्स वेयर crime is not involved. Session court deals with criminal cases, that is where crimes are involved. Metropolitan court is basically for metro cities where population is greater than equal to 10 lakhs. Let's see everything in detail. Supreme Court is the apex body. It is the highest most court of this country, established on 26 January 1950. Jurisdiction, its area of operation is in entire India. The highest authority is Chief Justice of India, CJI, basically the highest judge. Currently it is D.Y. Chandrachud. Number of judges are 7 judges and 34 total. Principal bench, what do you mean the principal bench sir? Basically one judge cannot handle all cases. डू यू थिंक कि एक ही जज को सारे लॉस का पता रहेगा? इनकम टैक्स, जीएसटी, क्रिमिनल, क्राइम, सिविल, सब कुछ नहीं. सो अ जज कैनॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट. सो देयर आर डिफरेंट बेंचेस, दैट इज डिफरेंट रूम्स वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जजेस सिट and they deal in the specialized matters. So these rooms are called as benches. So there are 7 judges in the principal main bench and 34 in total judges. So see, Supreme Court of India has total only 34 judges. The number of court is 1. Obviously it is the only single court, and individual can file writ petition. So what is this writ petition? We will go in detail about this. Okay, let it be right now. Sir, High Court, what do you mean by High Court? High Court is the highest court of a state or a union territory. The first High Court was, the oldest High Court is in Calcutta, 2nd July 1862. Sir, no dates. नो डेट्स, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं. इसका जुरिसडिक्शन एरिया ऑफ ऑपरेशन एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे होता है. 25 टोटल हाई कोर्ट से इंडिया में, जिसमें से 6 out of which 25 total high courts, out of which 6 are high courts are 6 states share the same high court. Again here individual can file a writ and writ petition. We are going to go in detail about this also, writ petition, what it is, and it has appellant, original and supervisory jurisdiction. Sir, what do you mean by this? In the previous lecture we had already did what I mean by appellant, what I mean by original, what I mean by supervisory jurisdiction. So please, if somebody is watching this video directly, ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए फर्स्ट वीडियो पहले देख के ही करना. Next comes the district court या फिर session court. Below high court, every district has its civil courts which deals with the civil cases which are dealt by the district courts, and criminal cases which are dealt by the session court. Its limit, इसका लिमिट होता है इसकी डिस्ट्रिक्ट्स या फिर जो लोकल लिमिट ड्रॉ की जाती है. एंड सिविल जज जो होता है ना, ये 2 करोड़ से ज्यादा वाली कोई भी सिविल फ्रॉड वाली केस हैंडल नहीं कर सकता. I hope this is clear, and let's go to the last one, that is the metropolitan court. Sir, what do you mean metropolitan court? These are basically courts formed at the metro cities, Pune, Mumbai, Delhi, Hyderabad. Not Hyderabad, sorry, Bengaluru.
So metro cities are the cities where population is greater than equal to 10 lakhs, and High Court sets this metropolitan court. High Court has to set up this. It's local jurisdiction. इसका jurisdiction area of operation एक city होता है, साथ ही साथ यहाँ पे chief metropolitan magistrate जो होता है, इसके पास CGM की power होती है, metropolitan magistrate के पास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर होती है. सर व्हाट डिड माय चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज सीजीएम, व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इतना डिटेल में मत जाओ, इसको याद नहीं करना है, फिर भी बता देता हूं. व्हेनेवर यूपीएससी कंडक्ट्स एन एग्जाम, आईएएस ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड. दिस आईएएस ऑफिसर्स आफ्टर सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिकम द डीएम, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब ऐसे लोग which gives first hand justice, they have to give first hand justice. I hope this is clear now. Only the pending part is about writ petition. Sir, what is a writ petition? Generally in India, whenever you want to go for a case, आपको जब भी केस को जाना है, मान लो किसी ने चोरी करी है, थीफ है, तो उसको सबसे पहले केस दाखिल करनी पड़ती है एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ही विल फाइल अ केस एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, then or session court, whatever. Then the case will go to high court. Why high court, sir? We district court के साथ हम happy नहीं है, तो we'll go to the high court. After high court we are still not happy, हम happy नहीं है उसके decision के साथ, we'll go to supreme court. वो आपको बताओ, जब तक जस्टिस आएगा ना, तो चोर भी मर जाएगा, जिसकी चोरी हुई वो भी मर जाएगा, इतना लेंदी प्रोसेस है. तो इस केस में इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स अस कि वी डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? तो यस, जब भी हम सीधा हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो जिस पेपर के थ्रू हम प्रेयर करते हैं ना कि सर प्लीज हमारी केस हैंडल कर लो, उसको कहा जाता है रिट पिटिशन. क्या कहा जाता है? रिट पिटिशन. अगर मैं रिट पिटिशन को लॉ की लैंग्वेज में बात करूं, तो वेयर देयर इज नो रेमेडी, जब भी रेमेडी नहीं मिल पाती ना किसी चीज के लिए, तो रिट पिटिशन फाइल किया जाता है. आपके लिए इतना डिटेल में रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने जितना बताया उतना ही याद करो कि सीधा फाइलिंग अ केस एट द हाई कोर्ट इज ऑलवेज थ्रू अ रिट पिटिशन. पिटिशन यानी कोई पेपर जिसके थ्रू हम प्रेयर कर रहे हैं सर हमारी केस हैंडल करो, एंड रिट यानी ये चीज के डायरेक्टली अप्रोचिंग द हाई कोर्ट. और यहाँ पे किसी को अगर दिख रहा है फ्राइट्स, फ्राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमने कल वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन द प्रीवियस lecture only. So this was it what the India this is it for the Indian regulatory framework. As far the question and answer practice is concerned, let's go for it. This is my law question bank that I have framed. Okay, quite more scribbling has happened here, बहुत ज़्यादा scribbling हो गई है. Okay, so these are the most important questions that we have. A to I are the most important questions that you have to write, and below are the extra questions that you have to do. Extra questions ऐसे है, these are the questions which might come into exam. So there are roughly 20 questions which might come in exam, and the answers of those are also given. As far as this A to I questions are given, this इनके answers अपने notes में cover. The answers of these questions already covered in our notes. So first one is describe brief features of Indian Constitution. Sir, how to write this question? I have already wrote it in while in the live lecture, so I will just give it gist of it how to write. So first what I will do is I am telling you that, for example, this is your page. Okay, this is your main question answer writing page. So first thing, always the first thing should be that you should always write your question number in the middle of the page, center of the page, like this. Use two lines, दो lines use कीजिए चलेगा, लेकिन ऐसे लिखना क्वेश्चन 1A. साथ ही साथ जब हम नीचे चलते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है द ब्रीफ फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज. सर क्या है, कौन से है? तो लेट्स गो को दिखाता हूँ. हमारे नोट्स में हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स है. सी दैट दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. ओके, so see, features of constitution: democratic है, made by people है, fundamental right, powers and duties, law making are divided 3 list. So see, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, we have written this in detail, but in the answer we don't have to go this much detail. I will first write okay democratic, and I will underline it with my pen only. No pencil, no pencil. Don't use pencil in paper. Only pen, pen, pen. So I will write democratic. I will underline it, and I will write inside that the IC, that is the Indian Constitution, states that India is a democratic nation that is by people and for people, and I have underlined by people and for people again. Okay, this is how I have to write. Then I will write fundamental rights and duties. This is the major point. I will again underline it. Instead, I don't know the content. I will simply write that it gives fundamental rights of people and their duties. Sir, I have a grammatical mistake here. I write there, for there, this, that, whatever. Though all grammatical mistakes are allowed. Grammatical mistakes 100% allowed है. कोई भी टेंशन मत लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अलाउड है. फिर सिर्फ एकदम मतलब ही मत बदल देना, ठीक है? ये देखिए हैंडराइटिंग, देखिए ये हैंडराइटिंग काफी बेकार है, लेकिन दिस इज लेजिबल. तो लेजिबिलिटी मैटर करता है, मैटर्स लेजिबिलिटी, हैंडराइटिंग लेजिबिलिटी मैटर्स, नॉट द हैंडराइटिंग, नॉट द ब्यूटी ऑफ द हैंडराइटिंग. ओके,
Then the next heading is powers. Again, underline with pen, and it gives powers to the central government as well as state government. See how simply I have wrote it. No extra English, कुछ भी extra English नहीं use किया, कुछ भी difficult words नहीं use किया. How simply I have wrote it, and simply underline the central government and state government. This is how you have to write, sir. Sir, you have left. यहाँ पे line छोड़िए, sir. You have left line here. Yes, you can leave. You can not only one. You can leave 2 lines, 3 lines. जैसे चाहिए वैसे लिखो सर. No issues. There is no issue about the presentation. Next come the law making process. Again, I have underlined it, and it gives lawmaking. It gives the lawmaking process. See how easy I have written inside. The inside content is so easy. And last is the constitution gives 3 lists. It gives 3 lists for the government. If I know that there is a joint list, there is a center list, there is a state list, okay, that is union list, sorry. If I can write, okay. If I cannot, just write there are 3 lists for government. That's it. This is how your answer should be. Okay, this is how your answer should be. For detail, in the live classes we already covered a detailed answer writing process. Here this is a gist about of all of this. Okay, always remember, even if you have space left on the page, just ignore it. Don't write it. Don't write anything here. Go to the next page. Okay, go to the next page. Never shuffle the sub questions. That is, don't write like this: question 1C first, then question 1A, question 1B. Sir, ऐसा लिखने से marks नहीं मिलेंगे. Don't we get marks? नहीं मिलेंगे. Marks will be there. But just in case if the examiner gets to know कि there is a shuffling, it might happen कि आपकी marking सही से ना हो. इसलिए better है never reshuffle. Go by this: question 1A, question 1B, question 1C. Sir, can we reshuffle the question numbers? That is, solve question 5 first, then question 6, then question 3. Yes, you can go for 5 first, then 6, then 4, then 2, then 1. You can go any way that you want to go, but just try not to reshuffle the sub questions. साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, इस चैप्टर में से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने वाले. सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब जो मेरे क्वेश्चन बैंक में है वैसे के वैसे ही आएंगे. द क्वेश्चंस विल बी वेरी डायरेक्ट. देयर विल नो केस स्टडी, देयर विल नथिंग फ्रॉम दिस इंडियन रेगुलेटरी framework. With this I end up my session. With this I end up my classes. For those who are watching my videos for the first time, who have not attended the live classes, I want to tell you कि जो भी हमने क्वेश्चन बैंक है ना, तो क्वेश्चन बैंक you will get it on my portal. If you are my student, you will get it you will get this law, which one is this, question bank. What you have to do is, क्या करना है आपको, you have to read the question, okay, go to the concept where it is given, read the concept twice thrice. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट पे जाके कॉन्सेप्ट को 3-4 बार पढ़ो. सर लर्न करना है नहीं, ये करने के बाद इसको अपने पेज पे राइट इट ऑन योर नोटबुक जस्ट द वे दैट योर माइंड टेल्स यू टू डू. सर आई कैन नॉट इवन रिकॉल 1 लाइन ऑल्सो. सर मुझे एक लाइन भी नहीं याद आती, तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, वापस जाके 3-4 बार पढ़ो एंड आके लिखने का ट्राई करो. डोंट लर्न, डोंट रीचेक. सर मैं स्पेलिंग मिस्टेक चेक करूँ क्या, सर मैं लर्न करूँ क्या, सर मैं ये करूँ क्या, सर मैं कुछ भी नहीं. सिंपली रीड द क्वेश्चन रीड करना है, जाके 3 बार कॉन्सेप्ट पढ़ना है. 3 बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आके वापस क्वेश्चन पढ़ के जितना मन से हो सके उतना लिखना है. लिखने के बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने ही पोर्टल पे जो असाइनमेंट है वहां पे अपलोड कर देना है. विदिन 1 या 2 days I will immediately reply you whether you are writing correctly or not. Sir, how many questions I have to attempt? You have to go from A to I. All questions you have to attempt. Always remember, don't recheck, don't copy, to be honest, right? As far as extra questions are concerned, you just have to read them once because it has the answers are already given here. ये 2 marks के लिए, it might come for 2 marks also. 2 marks के लिए भी ये आ सकते हैं. With this we have covered the entire Indian regulatory framework. Thank you.